अच्छा जी, अभी हम लोग स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर ना जो हमारे प्रॉब्लम्स आए, बच्चों ने कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस किए थे और उन पास पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चंस कि द व्हाइट लाइट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड स्टेट द नेम ऑफ द फोर ऑफ द कलर्स आउट ऑफ दैट, तो दैट टेक प्लेस इन दैट इन द ऑर्डर। तो आपने स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डेफिनेटली आपकी ग्रीन होती है, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि दैट इज GXULIMR, दिस इज वन ऑफ द मेन सीक्वेंस, जिसको आप कह सकते हो कि दे हैव द इट्स वेवलेंथ इज स्मॉलेस्ट and its wavelength is largest, so you have to go through this order: gamma, x-rays, ultraviolet light, infrared, microwave and radio wave, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास है this question is a tough question. A narrow beam of white light can be split into different colors. In figure 10.4 shows a white light emitted from the lamp. Complete figure 10.4 to show how the narrow beam of beam is produced from these rays, and show how the spectrum is shown on the screen. Label your diagram. तो आपने ये डायग्राम लेबल करनी है। एक्चुअली ये आपके पास एक रैंडम डायग्राम है, आई मीन एक आप यूँ समझ लो कि हमारे पास एक रैंडम वो है, आई मीन टू से light source है. In that light source the light is emitting from one point and it is spread out in all directions. लेकिन आपने इसको कन्वर्ज करना है, तो सबसे पहले आप देखो कि if I want to place a converging lens here, ठीक है, तो converging lens हम लोग place कर लेते हैं. Let's say this is a converging lens. तो converging lens के लिए just मैंने एक मतलब converging lens complete ना भी show करें, I have just shown you that this is the center of the converging lens and the light rays will reach to that point from here. ये आपकी light ray यहाँ तक पहुंचेगी. This light ray will reach to this point, ठीक है। आपको ये भी जरूरत नहीं है कि you are going to draw all these light rays, just draw two light rays, ठीक है। अब आपको पता है कि these light rays would be converged, isn't it? ऐसे ही है ना, light rays converge होंगी, and once you are going to converge them, then this light would be falling on the prism. हमें definitely diffraction, सॉरी इसकी डिस्पर्शन भी करवानी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग भी करवानी है. सो दीज लाइट रेज विल, ओके, मैं एक लाइट रे यहाँ से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, टिल दिस. तो आफ्टर द लेंस द लाइट रेज विल कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है. लेट्स से आपके पास यहाँ पर इनको कन्वर्ज करा देते हैं. दिस इज द सिंगल पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज आर कन्वर्जिंग, एंड वंस दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट दे विल, हियर वी विल यूज अ प्रिज्म. तो प्रिज्म यूज करने के लिए आप क्या करोगी, यू कैन ड्रॉ प्रिज्म हेयर, और इस प्रिज्म के सरफेस के ऊपर आप यूँ समझ लो कि हम लोग ये कर सकते हैं कि वी कैन मेक अ सिंपल प्रिज्म, और उस प्रिज्म से हम लोग ये बोलेंगे कि द लाइट वुड लाइट वुड बी कन्वर्ज, सॉरी दैट विल बी स्प्लिटेड, और स्प्लिटिंग के बाद लाइट आपकी क्या हो जाएगी, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स. तो अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ड्रॉन दिस वन, सो यू हैव टू डिलीट दिस वन. ये अपने रे अभी इसकी जरूरत नहीं है. अब आप एक सिंगल रे ड्रॉ करो और जस्ट कंसीडर इट कि दिस इज अ फिक्स पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइट आ रही है, एंड राइट आफ्टर दैट you will draw one light ray here, then this light ray will be here. जी बेटा, जो लैंप से जो लाइट निकली है वो व्हाइट लाइट है या फिर? हाँ ये व्हाइट लाइट है. ये सारी की सारी, ये आपके पास क्या है, ये आपका लेंस है, ठीक है. ये आपके पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है. दिस इज योर प्रिज्म, because we have to label the diagram as well. So this is basically the splitted light. तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि red will be at the top and violet will be at the bottom. तो आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द मेथड. और अदरवाइज अगर आप ये करो कि इसको कन्वर्जिंग लेंस का, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का एविडेंस देना जरूरी है, बिकॉज वंस द लाइट वुड नॉट बी कन्वर्ज, आप ये नहीं कह सकते कि लाइट आपकी सिंगल बीम में कन्वर्ट होगी. सो वंस वी हैव टू मेक इट अ सिंगल बीम, एक बीम बना के फिर प्रिज्म पे डालना है, और देन वी हैव टू यूज दिस ऑर्डर वायलेट टू रेड. रेड ऊपर कर लो और वायलेट नीचे कर लो.
एंड इनसाइड द प्रिज्म भी आपने यही दो लाइंस ड्रॉ करनी है, रेड एंड वायलेट को। ये बात क्लियर है? तो सिर्फ दो ही करनी हो क्योंकि लाइक 4 रेज है ना? आपकी 4 रेज की जरूरत नहीं, ये तो बेसिकली आपका एक वो है ना, क्या कहते हैं उसको, एक व्हाइट लाइट जनरेट हो रही है। तो ये 4 रेज आपके कलर्स तो नहीं है, ये तो कंपोजिट लाइट है, ये भी व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये भी व्हाइट लाइट है। तो बेसिकली आप यूं समझ लो कि मैंने ये किया है, अब इसी डायग्राम को मैं सेपरेट करके आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंसिडेंट वाइट लाइट, आपने ये किया कि प्रिज्म के ऊपर आप एक लाइट इंसिडेंट कर रही हो, ठीक है, और प्रिज्म इस लाइट को क्या करेगा, इट वुड स्प्लिट इट, ठीक है। ये आपका स्क्रीन है, सपोज दिस इज द सेम स्क्रीन, और आप यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, लाइक दिस द व्हाइट लाइट, ठीक है, ये आपका क्या व्हाइट लाइट है, सो व्हाइट लाइट विल बी स्प्लिट इनटू सेवरल कलर। So let's say instead of drawing all the 7 colors, I will draw 2 points, I mean 2 bonds, and I will say that this is a sort of highest order and the lowest order. Highest order आपके पास क्या होता है, रेड होता है, और ये आपके पास लोएस्ट ऑर्डर वायलेट होता है। तो इन बिटवीन दैट यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइट्स, नंबर ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो ये आपके पास व्हाइट लाइट है, दिस इज द प्रिज्म, एंड दिस इज बेसिकली द स्प्लिटेड लाइट इनटू सेवरल कलर्स। क्लियर है ये? यस सर। ओके, यस सर। तो यस, हाँ इजा आ गई हो आप? जी सर मैं थी। अच्छा, आपका प्रॉब्लम ही डिस्कस करा था, तो हाँ मैंने जी। कहा अगर आप नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम डिस्कस करने का फायदा नहीं। नहीं मैं हूँ। क्लियर हो गया मेरा बेटा? जी हो गया। गुड। तो अब हम जाते हैं अरीबा के प्रॉब्लम। अरीबा आ गई, क्लास ज्वाइन किया अरीबा ने? नहीं उसने नहीं की अभी। ओके, तो here are some problems। चलो ये प्रॉब्लम्स आए हुए हैं तो आई कैन डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स इन बिटवीन। खदीजा और रिजान आप दोनों ने क्लास ज्वाइन किया ना? जी। आपके प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई? नहीं हो गया मेरे पास, वही बस थे। ठीक है। खदीजा आपका भी नहीं है कोई? नो सर। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ दीज आर द प्रॉब्लम्स एज वेल। व्हेन वंस यू विल गो थ्रू दीज क्वेश्चंस you people will face the problems। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि स्टेट द टू कंडीशंस व्हिच मस्ट बी ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब क्या है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, ऑल द फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है, एंड all there should be no resultant force। नहीं, इट इज इनकरेक्ट। आपने दोनों बार फोर्सेस नहीं बतानी। क्या हो सकता है, the forces should be balanced and there would be no net movement or there should be no resultant movement, ठीक है, ये बात क्लियर है? तो here she will get 1 mark। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, इन फिगर दैट शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल पी क्यू इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पी इज ओवर हियर, आपके पास यहाँ पे पिवट है, जस्ट mark it that it is a pivot। basically इसके ऊपर ये बैलेंस है, and there is a weight at its center of gravity, ठीक है, because center of gravity आपका क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, 100 मीटर लॉन्ग है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट 50, so that is fine, force is applied over here। तो आपको ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, you have to on figure 2.1 draw and label the arrow to show the direction weights। तो उसने ये सही किया हुआ है, that is fine, so she will get 1 mark। arrow that show the direction of r on pq। तो पिवट के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसने शो किया, ये भी सही है। by taking the moment about the pivot का मतलब आपने पिवट के से भी डिस्टेंसेस लेने, कैलकुलेट द फोर्स, राइट, व्हाट टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, ये वाली फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि what would be the moment of P? Will it be clockwise or anti-clockwise? It is your anti-clockwise। What about the moment of this force? This is the same anti-clockwise, ठीक है? ठीक है। Okay, और what about the moment of this W? This is your clockwise, ऐसे ही है। तो आपको ये पता है कि if a rod is in equilibrium, sum of clockwise moment should be equal to sum of anti-clockwise moment। तो आप कर सकते हो F1 D1 is equals to F2 D2। F1 D1 equals F1 D1 plus F2
D2 equals F3 D3. The reason behind that is there are two anti-clockwise movements and one clockwise movement. So आप anti-clockwise movement में आप देखो, this is 0.5 Newton and the distance from the pivot is how much? Yes. 10 centimeter. Yes, perfect. 10 centimeter. तो इसका मतलब ये हुआ कि I can consider this as 0.5 into 10 centimeter. तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. It is 0.5 into 10 centimeter. 10 centimeter. Basically, I have to use all the distance in centimeter. इसलिए मुझे conversion की जरूरत नहीं. The next anti-clockwise movement is this red one. So this is the force what I have to calculate. And at what distance it is acting from pivot? Yes. Pivot is here. From this point to this point. This distance is how much? Can anybody tell me? Out of 100, 10 centimeters is on the left side of the pivot. So ये remaining distance आपका कितना हो गया? It is 90 centimeter. Yes. तो आप इसको यूं कर लीजिए. It is F unknown into 90 centimeter. And now the only clockwise movement is the moment of the weight. So weight आपका कितना है? W है. And W is given to you. A mass of the rule is this 0.12 kg. तो आपका weight कितना हो जाएगा इसका? And its weight is W. W is equal to 0.12 times 9.8. So calculations, please. Do you have calculator? शाबाश शाबाश शाबाश. हरी बहुत सारा काम है. Yes, Iza or Khadija, do you have calculator? एक मिनट. Yeah. 1.2. 1.2. Okay. 1.2 Newton. इसका मतलब ये हो कि 1.2 Newton is basically acting at 1.2 Newton is acting where? At how much distance from the pivot? From this point to this point distance देखो कितना है? 40 centimeter. 40 Yes. तो आप simply ये करेंगी कि 1.2 into 40. Yes, calculations करके देना जरा मुझे. What would be the answer of the force? It is 5 and it will be 4.8. Is it? नहीं नहीं ये 4.8. यस बताइए कितना होगा? 5 minus 48 divided by 90. Yes. What will be the force? कैलकुलेटर जल्दी जल्दी यूज करना है. खदीजा आपके पास कैलकुलेटर है? नो सर, हम बस ऑनलाइन कर रहे हैं इसी के. है? यस सर है. जल्दी जल्दी करो शाबाश. टाइम नहीं है ना. Divided by 9. बट सर आंसर अगर नेगेटिव में आए. और मैं बताता हूँ नेगेटिव में. एक्चुअली नेगेटिव का मतलब कि आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपने कैलकुलेट करना है ना. Actually, you can do in this way. मैंने तो ये किया ना. You can say that this 90F. Okay, मैं उस तरीके से कैलकुलेट कर लेता हूँ जैसे आप लोग चाहते हो, लेकिन कैलकुलेटर रखना है रेडी. जल्दी से अगर कहीं दूर पड़ा हुआ तो लेके आ जाओ. Okay, my subject is this F into 90. Let's say this F into 90 is equals to 1.2 into 40 कितना हो जाएगा? It will be 48. और ये 0.5 into 10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. So it would be subtracted here. So your F will be equals to 48 minus 5 will be 43 divided by 90. तो अब calculations करिए जल्दी से. What will be the answer? 0.5. 0.50 Newton. ठीक है. Now you got this point. आपके पास सारी फोर्सेस बेसिकली ऐसे हैं. 2 सिग्निफिकेंट 2 डेसिमल में जा रही हैं. दैट इज व्हाई. नाउ यू विल राइट कैलकुलेट आर. तो आर के लिए आपने क्या करना है? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस.
sum of upward forces is equals to sum of डाउनवर्ड फोर्सेस. तो अब आप देखो अपवर्ड फोर्सेस मेंशन कर लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस मेंशन कर लेते हैं. So what is this F? This force is 0.5 Newton. This W is 1.2 Newton. ठीक है? And this is 0.5 Newton. So what would be the forces here? The difference of the forces will be this. Difference of the forces will be here. ठीक है ना? आप दोनों को माइनस करिए, कैलकुलेशंस करिए, क्या आंसर आएगा? Okay, IG3. Yes. क्या आंसर आएगा? किस किस को माइनस करना है? देखो upward forces, there are two upward forces ना. One is this 0.5 and the second one is R. So you will simply say that for this question R plus sum of upward forces क्या है? R plus F है, और downward forces क्या है? P plus W है. Am I right? Yes. Okay, तो R कैलकुलेट करनी है. F is 0.5, P is also 0.5 and weight is 1.2. So what will be the value of R? 1 minute. 1.2 Newton. 1 minute. Calculations देखो सारी अपनी. Okay? जी सही है. ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपको बता रहे figure 7.1 shows a coil of the wire wood wound on the thin plastic cylinder. The plastic has no effect on any magnetic field. ठीक है? तो small trolley है, coil of the wire and north and south are entering in that. The magnet is fixed to a small trolley that turns without friction on the track through the cylinder. The trolley is released from the point A, so it runs through the coil from right to left. वो जो ऊपर diagram दिखाया है, it enters from right to left. ठीक है? So as the trolley enters here, what will happen? There would be a magnetic field, and once the magnetic field would be magnetic field lines would be cut. Magnetic field lines would be cut. तो आपके पास problem क्या आएगा? You will have a fluctuation here, isn't it? Do you agree? देखो, it is just an electromagnetic induction question ना. Electromagnetic induction will take place. So once the electromagnetic induction is taking place, simple बात है कि when the trolley would enter the coil, the magnetic field lines would be cut, and when the magnetic field lines will be cut, basically there would be an induced EMF. So चलो देखते हैं क्या पूछता है. State and explain what is observed on the galvanometer. Yes, state भी करना है क्या होगा और explain भी करना है. So I have stated that there will be fluctuation. Is it? So you will write that the galvanometer will fluctuate. It fluctuate. एक number. Reason, as the magnetic field lines are cut by the coil, magnetic field lines are cut by coil, which causes an induced current. ठीक है ना? Which causes an induced current. ठीक है? Is it clear? Clear to everyone? Yes. Okay. खदीजा आप कहाँ चली गई हो? बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay. So the trolley is now released from B so that it runs through. पहले B पे इसको लेकर गए. Okay. पहले A पे लेके गए, अब B पे लेके गए. The trolley is now released from B, the coil from the right to left again. State what is observed on the galvanometer and explain why this difference is there. Yes. Who will tell me? Isa, बता सकती हो? Now the trolley is released from B. When trolley is released from B, actually the cam is
that it is reaching to the coil with larger speed, na? Yes. It is reaching the coil with larger speed. तो जब वो coil पे larger speed पे पहुंचेगी with large or with more speed, so what will happen? The rate of change of flux would be greater, is it? There would be a Yes. faster rate of change of flux, right? There will Yes. be, so there will be, yeah, there is a rapid cutting of magnetic field lines. तो आप ये कह सकते हो कि the rate of EMF would be faster. Yes, more rate of change is change of EMF, sorry, change of flux, magnetic flux. This is a new term. Magnetic flux होता है the number of magnetic field lines is rapid. This all was explanation. So the fluctuation will be more. The fluctuation will be high. या आप कह सकते हो fluctuation is more. Rapid नहीं, fluctuation is greater. आप कह सकते हो the meter would fluctuate at larger value, or it will show the larger value. For example, I can show you both the positions. This is the position of the meter once the trolley is coming from A. ठीक है, ये आपका ट्रॉली कहाँ से आ रही है? A से आ रही है, तो यहाँ पे जा रहा है. Once the trolley is coming from B, it would have more speed, so it would fluctuate more. Its position would be more. ये बात क्लियर है? जी. ठीक है, बट इनिशियली दिस वाज ओवर हियर, ऐसे ही था ना? दिस इज इट्स Yes. इनिशियल पोजीशन. सो मूविंग ऑन, a wire of length, yeah, this was the question. Now I think it is the next question. A wire of the length of 2 meter and a cross section area of 0.4 square millimeter has a resistance of 0.14 ohm. Calculate the resistance of another wire of the same material with length of 3 meter and cross section area is 0.9 millimeter square. Very simple. आप लोगों को मैंने बहुत ही परफेक्ट टूल बताया हुआ है, बट इफ यू पीपल रिमेंबर दैट टूल then you people will be able to manage that, otherwise नहीं कर सकते आप लोग. और वो टूल क्या था, किसी को पता है? What was the tool? Yes, can anybody tell? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला किसी को आता है? किसका? रेजिस्टिविटी नहीं आता ना, याद ही नहीं करते हो तुम लोग. ठीक है, okay, let's see. So actually this problem is just, this question has two areas where you people can have a problem. One, you are not aware of the formulation. Secondly, you are not aware of the comparison method. तो आपको ये दोनों एरिया, दोनों चीजें आनी चाहिए. ठीक है, फॉर्मुलेशन क्या क्या यहाँ पे यूज हो सकती है? You know, the resistance is equals to resistivity L divided by area. Is this formula clear to everyone? जी. ये लाजमी याद रखना है, इसको याद किए बगैर आप ये काम कर ही नहीं सकते. So as I know that resistance is directly proportional to resistivity, length and area, so can I make two equations that for wire 1, R1 is equals to rho L1 divided by A1, and for wire 2 can I say that it is equals to rho into L2 divided by A2. ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए. तो this is your equation number 1 and the other one is your equation number 2. So if I say that this is your equation 1, this is your equation number 2, so just divide them both. Once you are going to divide them both, so R1 upon R2
that is equals to what? Rho into L1 divided by A1 into, अब आप देखो डिवीजन को हम जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डू वी टेक रेसिप्रोकल और नॉट? ये ऐसे हो जाएगा ना, A2 divided by rho into L2, is it? जी So when the material is same material जब भी होगा तो I told you times and again the resistivity of material 1 will be resistivity of material 2 and that will be equal to resistivity. So you can just cut them all. कि आपके पास resistivity will be gone. अब आपका जो formula बनेगा, this formula is very important for you. It works a lot. R1 divided by R2 equals to L1 divided by L2. I can take a ratio of length into A2 divided by A1. Now this is the master equation. You have to recall that equation. वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये equation याद करो. But once this is recalled, then it is very easy to handle that. यार ये वाली equation आप क्या कर सकते हो? You can use this equation by all means. ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है. अब आपने याद रख लिया तो नाउ यू विल अप्लाई दैट. अप्लाई कैसे करना है? R1 अपॉन R2. So what are the values? R1 upon R2 is equal to, what is length? Length 1 is 2. What is length 2? 3. ठीक है, ये देखो ना, this is your length 1, this is your length 2, this is your area 1, this is your area 2, this is your area 2. So just plug in the values, no worries at all. L1 divided by L2 हो गया, A2 divided by A1 है, तो A2 कितना है आपका? 0.9. नो नीड ऑफ कन्वर्शन ऑफ मिलीमीटर्स. ये सबसे आसान तरीका है अवॉइड द कन्वर्शन का. तो अवॉइड कन्वर्शन के लिए आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके बगैर आपके पास चॉइस नहीं है. ठीक है, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.4, जस्ट वैल्यू प्लेस करिए. R1 आपके पास कितना है? R1 is 0.14 ohm and you have to calculate R2. So moving onward, 2/3 कैलकुलेटर है तो जल्दी से कैलकुलेट करो प्लीज. 2/3 into this, so it means you will multiply that. 2.2 into 0.9 is basically 1.8 divided by 3 into 0.4 is basically 1.2. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके दीजिए. सो R2 will be equals to 0.14 times 1.2 whole divided by 1.8. Calculations please. 0.14 times 1.2 equal to divided by 1.8. So my answer is 0.09. So what's yours? जी 0.093. Yes, 0.093 ohm. So this is the answer, 0.093 ohm. Unit लिखा हुआ है already. So this is basically a question of 4 marks. So that was very good question. अब आप अगले क्वेश्चन पे. Is it clear to everyone? I will solve and send it in the group. So मेरा हाल अभी अगर आप नोट नहीं भी कर पा रहे तो it's not a big deal. So I'm moving towards the next part. That is another horrible question. ठीक है, आप लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया, नहीं तो आपको लाजमी इनमें प्रॉब्लम्स आते थे. But once you people will go through that, it would help you out. Okay, we have discussed these all problems. Figure 2.1 shows a model fire engine that its brakes are applied. Okay. Yes, what is available? Its mass is 0.8 kg. Right. Mass is हमारे पास कितनी है? Mass is 0.8 kg. And it emits a jet every 0.6 seconds at a velocity of 0.72 meters per second relative to the model. So ये basically jet is being fired, or the velocity of that jet is this. It is mentioned, so आप यहाँ पे भी mention कर लो. It is 0.72 meter per second, and after every 6.0 second it is being released. So
Calculate the change in momentum of the water of the ejected in 6.0 second. तो मोमेंटम में चेंज आप मोमेंटम में चेंज फाइंड करना आपने. तो here you will write delta p is equals to m into delta v, right? So just please ensure this thing that उसने change in momentum पूछा हुआ है. So you will write delta v. Okay. So for this one, mass of the water is 0.8 kg, 0.8 kg, and change in velocity is 0.72 minus 0, because initially it is at rest. So you will get this answer. So it is कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए. 1.8, 1.8. Yeah. Okay. So how many significant figures do we have? Two significant figures. So you will not write 1.88. You will write 1.9, and unit is also required. Unit का momentum का unit होता है Newton seconds. ठीक है, or kg meter per second. Then सही. the next is calculate the magnitude of the force acting on the model when the for the jet of the water. So again, there is a game in that one, that F is equals to delta P over T. ये इस बच्ची ने सही लिखा था, but second I don't know इसने क्यों इसको काटा है. It is delta P by T. So F is delta P by T. So the momentum you have calculated was it 0.58 या 1.9? क्या लिखा था? आप लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो मेरे साथ? हरी आप 1 मिनट. उत्तर कैलकुलेशन तो करो यार. ये भी मैं करके दूं तुम लोगों को. 0.576. Yes, it is 0.576. Oh my god. तो तुम लोग कैलकुलेशंस भी गलत करवा दी है हमारी. 0.576, 0.576 है, तो ये 0.58 हो गया. Yes, she have written properly, but I would request to Ariba to write proper digits. Once she will see the recording, inshallah, she will note down the problem. And secondly, you have to mention the Newton second unit भी लिखना बच्चे. Then F is equal to delta P by T is fine. 1 mark for this one. And then 0.5. Here you will write the calculated number 0.576 divided by 6. Are you getting my point? Yes. Okay, क्या आंसर आया? Divided by 6. 0.096. Very good. 0.096. And what will be the unit? Newton. So again, she will lose 1 mark from here. Yes, 1 mark from here, because she has not put the units. So you have to take care of these all by hello. ठीक है? Okay. सही है. Next is state and explain the direction of the acceleration of the model. So it will go backward, definitely. Explanation, because the force, yeah, this is true that it would move in the backward direction when once the brakes will release. तो क्या होगा? या brakes ना भी release हो, once the jet is moving forward, it will exert an equal and opposite force in the opposite direction. तो आप लिखोगे कि according to Newton's third law, the action is equal to reaction. So according to Newton's third law, ठीक है? सही है. Forward force is equal to backward force. ठीक है. Forward force equals to backward force. ठीक है? Is it clear to you? Okay. Yes, it is clear. Next, it is said that the model contains a water tank which is initially full. State and explain any change in the magnitude of initial acceleration if the brakes are first released when the tank is nearly empty. Wow. Once the tank is empty, what about the mass? Mass is really decreased. Once the mass is decreased, the force of jet is same. Force is constant, right? Remember this thing. So once force is constant, what about A? A is equals to force divided by M.
So if m is decreased, it means acceleration would be more. Is it ठीक clear to everyone? yes ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे acceleration will be more. Acceleration is more. Reason, as the force is constant, ये मेंशन करना है कि force is constant, mass reduces and acceleration is equals to force divided by mass, so acceleration increases. I have written that at the top statement, no need to write again, but लिख लो, दिल को तसल्ली होती है. सही है ठीक है. तो फोर्स कांस्टेंट क्यों होगी इसमें हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मुझे किसी और ने क्यों नहीं पूछा? Actually, the release of the jet is at the same speed, 0.72 meter per second, and the same water is being released. So mass of the water is same, 0.80 kg, right? And it is released at the same time, so that is 6.0 second. So अब आप मुझे बताइए, what will be the force? Will it be the same or not? yes That's the problem. ठीक है. ठीक है Yes. So next is each group of the solar cell arranged. Okay, ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन I will try to make it clear. Each group of the solar cell arranged in a rectangle of 1.2 meter into 2.8 meter. The solar cells are situated in a region where 260 watt of the solar energy is received per square meter of the cell. The electrical output, here it is mentioned that you have electrical output of each group of the cell is the current is this. Each group of the solar cell is very important. ठीक है, तो बाकी आपके पास करंट गिवन है 2.5 एम्पेयर एंड 886 volts. Calculate the efficiency of the cell. Yes, efficiency of the cell. So first of all, most of the students know the formula of efficiency. Then they know that for that purpose they have to calculate two major areas, and those areas are here. What is the formula of efficiency, by the way? Useful output energy divided by input energy into 100 Very good. Useful output divided by total input. Okay, just a second. I have to erase this. These two. अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात है. There is no energy. You can say because the output is power. आप power की form में ले आइए, ठीक है? सही है Okay, so you can say that efficiency is equals to useful output power upon total input power. Total, I am emphasizing on this word. Total input power times 100. ठीक है, अब आप देखो, आपको सबसे इजी चीज यहाँ पे क्या है? You can calculate the output power because the output power is in which format? V and I. तो आप यहाँ से separately दो चीजें कैलकुलेट कर लीजिए. P out is equals to V into I. So voltages are 86. Calculator वाला बच्चा शाबाश into 2.5. Yes, what will you get? This one? 215 215 watt. ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई. हाँ जी ओके, अब आपके पास है, उसने बोला हुआ है कि each group of solar cell is arranged in this यानी in rectangular area इतना. The region where 260 watt received per square meter. This is the trick of this question. Simply, if you are able to know that one, question is in your hand. आप इसको आप मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकता. ठीक है, अब देखो, आपको आउटपुट कैलकुलेट कर दिया आपने. इट इज, यू हैव स्कोर्ड 1 mark.
बट अब आपको इनपुट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो वेयर विल बी द इनपुट? मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ. द इनपुट जी एनर्जी is basically equal to total, sorry, input power, sorry, it is not energy, it is power, because power is given to you. So input power is calculated in this way. तो input power को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला लगाऊंगा मैं? देखो अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को. ये क्वेश्चन एक मजे का क्वेश्चन है. इट इज सेड दैट टोटल 1 स्क्वायर मीटर का अगर आपका रेक्टेंगुलर सेल होगा ना, 1 स्क्वायर मीटर, डू यू अंडरस्टैंड 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है? यानी 1 मीटर लेट्स से वाइड एंड 1 मीटर दिस वन. तो इफ इट इज 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर अगर है, ये 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, देन हाउ मच पावर विल इट अक्यूमुलेट? पावर रेडिएशन कितनी होगी? 260 watt. But your solar cell is not that much. Then how much is your solar cell? It is very small. ये देखो ना, आपका सोलर सेल तो इतना सा है. Am I right? जी So actually आपका जो सोलर सेल है, I have to figure out that cell के in that यानी how much power will be produced by this cell if I use that one. तो for this cell your power dissipation is, ये कितने बाय कितने का सेल है? It is 1.2 2.8. 1.2 into 2.8 मीटर का ये सेल है. तो आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए. आप ये देखोगे कि इफ एरिया इज, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 स्क्वायर मीटर गिव्स 260 watt and 1.2 into 1.2 into 2.8. हाँ जी 2.8 इसकी कैलकुलेशन करिए जरा. ये 3.36. Well done. 3.36 square meter gives you 260 into 3.36. तो क्या आंसर आ जाएगा? 873.6. 873.6 watt. One more mark is scored for you. तो इसका मतलब ये हुआ कि now you have figured out this all कि your output power, यानी total output power in this game, ठीक है, power output is how much? 873.6 watt. What was the sorry, my bad. It is your input power, right? It is your input power. So this is your input power and this is your output. Output power was how much? We have calculated output power 215.0 watt. अब आप efficiency का formula लगाओ and enjoy your answer. 215 divided by 873.6 into 100. Yes. 24.6. So 24.6%. जी Basically, it is 25%. ठीक है? ठीक है. Is it clear to all? So this was one of the horrible questions. Thank you, Ariba. तुमने इतने अच्छे questions highlight किए. Now we have this part. Maybe ये हमने कर लिया हो, लेकिन चलो देख देते हैं. This is a question number 7. She has highlighted this question. This question is basically a circuit divider. So here is a circuit diagram that includes the component X. Okay, X component X is your thermistor definitely. Then there is a 30 ohm resistor and 20 ohm resistor and an emitter is there and a switch is there. State the component X. So component X के लिए उसने बताया हुआ thermistor, it is fine, thermistor ही है ये. अब आपको बोला है the electromotive force of the battery is E. The switch is closed and the potential difference across 30 ohm resistor is V30. Potential difference across 20 ohm resistor is V20 and
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट x इज vx। ठीक, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी, ये यानी उसने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आपको उसने क्या बोला है, स्टेट द इक्वेशन दैट रिलेट्स vx टू, vx को किससे रिलेट करना है, v30 से। अब आप ऊपर देखिए, व्हाट इज vx, the voltage across this is vx, voltage across this is v30, so both are parallel. So when both are parallel, the potential difference in parallel combination remains same. तो आप कह सकते हो कि vx is equals to v30। am I right? Is it clear to all? जी तो जी आपका ये सही हो गया। अब E and V, V20, E and V20 का क्या रिलेशन है, E and V20, this is V20, so you can have E over here, so just simply make a relationship that E minus Vx is equals to V20, या आप कह सकते हो E minus V30 is equals to V20। is it clear to everyone? जी Because whatever the voltages will be dropped across these two components, they are same, so this E minus this answer will be equal to V20। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप E and V20 के लिए ये लिख सकते हो कि V20 is equals to either E minus Vx or either E minus V30। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? जी ओके, उसके बाद कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ द बैटरी 6 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट x इज 15 ओम, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टू बी कैलकुलेटेड। x की रेजिस्टेंस आपको गिवन है, अगेन गोइंग टू द सर्किट, सो x की रेजिस्टेंस कितनी थी, 15, या 15, तो इट इज 15 ओम। तो वंस दे बोथ आर इन पैरेलल, तो आपने सबसे इनके साथ पैरेलल की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, एंड देन 20 इज इन सीरीज विद दैट, सो यू विल ऐड 20 ओवर देयर। तो आप क्या करोगे, यस शी डिड इट, बट आई थिंक सो इट इज नॉट करेक्ट। r total is equal to r1 into r2 divided by r1 plus r2। this is for the two parallel one, 15 into 20, 30 divided by, yani 15 into 30 divided by 15 plus 30, so the answer is 10 ohm। so this 10 ohm is the combination of what, x and r। again मैं बता रहा हूँ, there was the thermistor x, ये उसकी रेजिस्टेंस है, और आपके पास जो रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है 30 ओम का, ये उन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है। तो यू गॉट 10 फॉर दिस, बट दिस 20 वाला इज आल्सो इन सीरीज विद दैट, तो आप करोगी 10 plus 20, so your answer should not be this one, your answer would be 30 ohms। is this clear to everyone? यस okay, उसके बाद आपको बोलता है calculate the ammeter reading, तो ammeter is why are we using 30 ohm, why? okay, oh yes, this is the problem here, Ariba। actually v total is equals to, the formula she has used is fine, v is equals to ir, but I is equals to v divided by r। so I told you times and again that it is I total आपने निकालना है ना, because that is in main branch, main यहाँ पे देखो ना, this is the total current, आपने total current calculate करना है। so this total current is equals to I is equal to v by r, so total voltages divided by total resistance, total voltages are 6 and total resistance is 60, we have calculated that। तो आपका total answer क्या हो जाएगा, now you have this was यानी this answer with you, that is total voltage is कितना है, 6 and total resistance is 30, so 6 by 30 is 0.2 ampere, got it? यस okay, the next question is the temperature of the component x increases, x का temperature increase होगा, state and explain what will happen to the ammeter reading। so again, okay, I have drawn this, so the temperature of the thermistor increases, right? so the definitely the resistance of the thermistor decreases, because that is the negative temperature coefficient, इसकी resistance कम होती है। when resistance will decrease, the resistance of this entire setup will decrease, the resistance of this parallel combination will decrease, overall resistance of the total circuit will decrease, and ammeter reading will increase। is this clear to everyone? जी okay, तो आप ये लिखोगे
कि यस एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज 1 मार्क, ठीक है, स्टेट का नंबर आपको मिल गया, ड्यू टू रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, ओके 1 मार्क वी कैन से, बट अगेन जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस, सो आर टोटल डिक्रीजेस, हेंस करंट इंक्रीजेस, ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, the next question is the related to alternating current. थक तो नहीं गई हो इज़ा एंड खदीजा? खदीजा छोड़ गई है, जी. बस तुम हो बस अकेली? Yes. ओके, थक तो नहीं गई हो? नहीं. पक्की बात है? जी. क्या करूं यार, ये बच्चे ना देखो अब छोड़ गए सारे मुझे एक एक करके. द स्टूडेंट टर्न्स द हैंडल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड द कॉइल and rotates figure sorry coil rotates, figure 8.1 shows the structure of an alternating current generator है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर में आपको ये देखना है कि देयर आर स्लिप रिंग्स एंड दीज स्लिप रिंग्स आर बेसिकली अटैच्ड विद द कॉइल एंड कॉइल हैंडल आप रोटेट करोगी, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई रोटेटिंग कॉइल प्रोड्यूसेस द आउटपुट वोल्टेज. तो ये मेरा बेटा सीधा सीधा मेमोरी रिकॉल का क्वेश्चन है, एंड आई विल रिक्वेस्ट अरीबा to memorize this all, के the rotation will cause the cutting of magnetic field. इसी तरह है ना, is a rotation of coil Yes. causes the cutting of magnetic field, cutting of magnetic field lines, ठीक है, हाँ जी. and as the flux changes, flux का word आपने use करना है, flux is basically the number of field lines, the flux changes, so rate of change of flux, rate of change of flux equals to EMF या induced EMF लिख सकती हो आप, ठीक है, induced ठीक. EMF, right, which सही. causes the output voltages, which causes output voltages, output ठीक है. voltages, ये लाजमी याद रखना है. Okay, the next one is state the position of the rotating coil when the alternating output is maximum, ठीक है, the value and explain why the maximum output causes at this position. तो आपको हमेशा एक बात याद रखाई थी मैंने कि once you are going to draw the position of the alternating current generator coil का जो rotation है उसको जब हम लोग rotation represent करते हैं, तो I will try to represent the rotation with different, ये आपकी कॉइल ना यूजुअली किस पे होती है, द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, देन कॉइल गोज टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, then coil goes to vertical position, again coil goes to horizontal position, again coil goes to vertical position, and so on. So in this way आपके पास क्या होता है, you have to manage this all, कि once the value is zero over here, अगर यहाँ पे कॉयल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ पे आपकी ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू दोबारा जीरो होती है, यहाँ पे आपकी ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम एंड अगेन दोबारा यहाँ पे जीरो हो जाती है, एंड सो ऑन. तो इट मींस यू विल हैव दिस सर्कल, ठीक है, जस्ट इट इज फॉर वन सर्कल, सो इसको छोड़ दो. अब आप देखो वेयर इज द हाईएस्ट, वेयर इज द मैक्सिमम पोजीशन व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, where the coil is horizontal and here the coil is vertical. तो आप लिखोगी the maximum position, the maximum output is, maximum output is at the horizontal position of the coil. एक मार्क आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया, horizontal position of coil, horizontal position of coil. अब reason, because the rate of change of flux is maximum here. आप flux नहीं लिखोगी because rate
of change of flux is maximum here. ठीक है, यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है. दैट इज व्हाई यू आर हैविंग दिस पोजीशन. गॉट इट? जी सही है. ओके, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, होपफुली यस. और ये कह रहा है कि a lamp and an open switch are connected in series of the output terminal of an alternating generator. The switch is closed and the lamp lights up. The student has to apply greater force on the handle. Explain why. तो I think so ये क्वेश्चन के हमने डिस्कस भी किया है कि once you are having a lamp here and there is a switch which is closed, so now there is a current which is produced or which is flowing through this coil. ठीक है ना? तो अब आपके कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो दैट करंट इज एन इंड्यूस करंट. सो इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स व्हिच कॉजेज इट. ठीक है, so as the circuit is closed, so the induced current opposes the motion of coil which causes it according to Lenz's law. अब मैं यहाँ पे रेफरेंस भी दे रहा हूँ. आपको Lenz's law याद है? ठीक है, Lenz's law ये कहता है कि when there will be an induced current, it will always oppose the direction of the source which causes its motion. ठीक है, Lenz's law को याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Lenz's law की स्टेटमेंट याद रखनी है कि ये क्या कहता है कि there would be a force, यानी there would be a magnetic field, or the magnetic field will always, or induced current will always oppose the direction of source causes it. ठीक है, ये Lenz's law की स्टेटमेंट भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये भी याद रखनी है. मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है बेटा जी, सही है. ठीक है. Lenz's law क्या कहता है कि the induced EMF or current always oppose the direction of source causes it. ठीक है जी, is it clear to all? मतलब all in one, एक ही तो बच्ची हो तुम. Yes. ठीक है, सही है. so here we go. ठीक है, ये तुम्हारे लिए है कि तुमने इतनी देर तक मेरे साथ क्लास ली है. सही, थैंक यू. ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई तुम्हें सारी? हाँ जी. पक्का ना? हाँ जी. गुड. बस अब इनकी बेस पे आपने काम करना है. ठीक है. ठीक है मेरा बेटा. अल्लाह हाफिज. अब जाके इफ्तारी कराओ, अम्मा को लगवाओ इफ्तारी. ठीक. ठीक है.